अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए एक वेज रेसिपी बना रहे हैं। हमारे व्यूवर्स बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि उनकी एक वेजिटेबल रेसिपी बनाने की, इसलिए आज हम लोग सोचे थे कि बड़े पैमाने पे वेजिटेबल सांबर बना रहे हैं। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं।
वेजिटेबल सांभर प्रोसेस शुरू करने से पहले हम लोग तूर दाल को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। वो बॉईल होते वक्त हम लोग सारे वेजिटेबल्स को कट करके रखेंगे। सारे वेजिटेबल्स हम लोग कट करके रखे थे। नेक्स्ट हम लोग मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें जो बघार के लिए सीड्स यूज करते हैं वो ऐड करेंगे। मस्टर्ड सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, चना दाल, क्यूमिन सीड्स और इसमें हम लोग मसूर की दाल भी ऐड करेंगे। इसी में हम लोग ड्राई रेड चिली भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट करी लीव्स, इसी में ही हम लोग गार्लिक भी ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह रोस्ट होते ही हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। प्याज अच्छी तरह ब्राउनिश शेड आने से पहले ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ सारे मसाले अच्छी तरह भुने के बाद हम लोग इसमें पोटैटोस और कैरेट और ड्रम स्टिक्स भी ऐड करेंगे। पोटैटोस, ड्रम स्टिक्स और कैरेट अच्छी तरह थोड़ा सा पकते ही हम लोग उसमें बीन्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ग्रीन चिली। नेक्स्ट हम लोग इसमें रेडिश पीसेस ऐड करेंगे। इन सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह पक रहे हैं। इसी वक्त हम लोग जो पहले ही बॉईल करके रखे थे दाल वो इसमें ऐड करेंगे। अब वक्त आ गया है कि इसमें हम लोग टैमरिंड जूस ऐड करने का। नेक्स्ट हम लोग जो कॉमन स्पाइसेस है रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर और साल्ट इसमें ऐड करेंगे। पहले हम लोग टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस डाले बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग ऐड कर चुके हैं। फाइनली हम लोग इसमें कद्दू के पीसेस, स्लाइस्ड टमाटोस और ककड़ी भी ऐड करेंगे।
फाइनल इंग्रेडिएंट हम लोग बैगन और भिंडी भी ऐड करेंगे। अब इसको हम लोग 20 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। उसके बाद कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखते ही हम लोग को खाने को दिल करेगा, इसलिए हम लोग इसमें इमीडिएटली कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। सांबार परफेक्टली बन गया है। बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे और बहुत ही मज़े का है। चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज का ये वेजिटेबल सांबार आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, अपने घर पे भी कोशिश करिए, अपने बच्चों को खिलाइए, उनकी बात हम तक पहुंचाइए। पहुंचाने के लिए 786godfoods@gmail.com पर मेल करिए, हम लोग आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।